Dear student, now we are going to study part 1 Algebra paper solution March 2020, maximum marks 40, time 2 hours. Question number 4. Attempt any two sub question from the following. Question number 1 is given. Represent the following data by histogram. ये डाटा दिया है हमें, एक टेबल दिया है. इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम इन रुपीज़, नंबर ऑफ वीक्स 18 to 24 वीक्स, 20 to 22 8, 22 to 24 22, 24 to 26 12, 26 to 28 6, 28 to 38. दिस इंफॉर्मेशन पर हमें क्या बनाने का है? हिस्टोग्राम बनाने का है. तो इन वाई एक्सिस वी टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 वीक. इन वाई एक्सिस वी टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 वीक. तो फर्स्ट सेंटीमीटर पे 4, सेकंड सेंटीमीटर पे 8, थर्ड सेंटीमीटर पे 12, 16, 20, 24 so on. We take class 18 to 20 here, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Class are continue. Class are continue है. Therefore, we take like this. Now we draw histogram. We start 18 to 24. Information कितनी है? 4. We draw okay. फर्स्ट ग्राफ तैयार. सेकंड 20 to 22 8 है. We join okay. Second is prepared. Now third 22 to 24 22 है. It is the maximum. 22 here 20 24 बीच में आएगा 22. Okay, third is prepared. Now you see fourth 24 to 26 12, 24 to 26 12. Now 12 here. Now next 26 to 28 6. Here 4 is 8. Now 6 here. ओके. लास्ट है 28 to 38. तो 8 इधर है. इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा 8 के लिए.
Okay, understand? Dear student, here price of sugar we take on x-axis. Price of sugar we take on x-axis, and in y-axis we take number of weeks. Number of weeks we take here. Okay, understand? Second question है, one person borrows rupees 4,000 and agrees to repay with total interest of rupees 500 in 10 installment, each installment being less than the preceding installment by rupees 10. What should be the first and the last installment? Once again, one person borrows rupees 4,000 and agrees to repay with total interest of rupees 500 in 10 installment, each installment being less than the preceding installment by 10 rupees. What should be the first and the last installment? Dear student, one person borrows rupees 4,000, but interest will be 500. Interest included, interest 500. So therefore total amount to repay means SN is equal to 4,000 plus 500, टोटल हो गया 4,500 रुपीज. ओके, एंड इन 10 इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट 4,500 repay in 10 installment. तो नंबर n is equal to 10. n is equal to 10. Number of installment is equal to number of installment. Number of installment n is equal to 10. Each installment being less than the preceding installment by 10. तो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -10. लेस देन बोला इसलिए -10 आएगा. कॉमन डिफरेंस -10. कॉमन डिफरेंस. व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स व्हाट? ए फाइंड आउट करना है. और लास्ट इंस्टॉलमेंट आखिरी का इंस्टॉलमेंट मीन्स लास्ट TN question mark. Now we are solve. Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Sn 4,500. We put here 4,500. n number of installment 10 put here. 2a is to find plus n की वैल्यू 10 minus 1 into d की वैल्यू है, d की वैल्यू -10. $4,500. 2 1 is 2, 2 5 is 10. Here 5 remaining. 2a 10 minus 1 9
9 minus into minus 10, 9 into minus 10 minus 90. 4500 upon 5, 5 इधर डिवाइड में आएगा, 2a minus 90. Here 5 ones are 5, 5 nines are 45. Here 900 remaining. कितने 500, 5 ones are 5, 5 nines are 45. 2a minus 90. तो 2a minus 90 is equal to 900. 2a is equal to 900 plus 90. 2a is equal to 990. a is equal to 990. a is equal to 990 upon 2. Divide 990 divided by 2. 4 5 2 4 8, माइनस करेंगे 1. 2 9 18, माइनस करेंगे 1 0. 2 5 10, 495. ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is a rupees 495. Now last installment TN is equal to a plus n minus 1 into d. 495 plus 10 minus 1 into d minus 10. 495, 9 minus 1, 10 minus 1, 10 minus 1, 9, 9 into minus 10, 90. ओके, तो 405 TN is equal to. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट TN is equal to rupees 405 rupees.